हमने लास्ट टाइम एक शीट बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था, इसका नाम हमने टेस्ट रखा था। और मैं इस फाइल को दोबारा से ओपन करता हूँ एंड सी। Aris, can I put it on the right hand side? Is it possible? The screen. I mean this bar. क्या राइट साइड पे रखना है? Like it is showing in front of my screen, so I just wanted to keep it aside on the right side panel. Is it possible? Um, if you have two screens, yes. If not, then it will be in the middle. No, okay, leave it. No. I Anyway, mean, just, students. I think it's fine. If students can see that, I think that should be fine. Yeah, okay. Okay, then this is the sheet we prepared last time. In fact, this one was the sheet, the main sheet, and स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम शीट बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फर्दर जो है हमने एक और शीट बना ली थी समझने के लिए। But this one is disturbing me a lot, it's keeping coming in between. Anyways, ये हमने एक शीट आपको रिकैप करके, आपने अगर रिकैप देखा हुआ हो चीज़ों को, तो हमने इसका ओवरव्यू लिया था दोबारा से कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों को बनाया था, और शीट हमने ये रेडी की थी। ये हमारे कुछ बेसिक्स टूल्स, ये हमारे टूल बार था, रिबन था, और इसके साथ हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमारी 1 2 3 जो लिखे हुए नंबर्स, ये हमारी रोज हैं, ये हमारे सेल्स कहलाते हैं। इस पे हमने ये देखा था कि ये सारे कट और पेस्ट किस तरीके से काम करते हैं। पेस्टिंग के हमने कुछ ऑप्शंस देखे थे जिसमें मैंने वैल्यू पेस्ट करना बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें कवर किया था ये वाला टूल जिसके अंदर हमने इसके फॉन्ट चेंज करने का, साइज चेंज करने का, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने का, बॉर्डर्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये जो हमने बोर्ड लाइंस लगाई हुई हैं वो किस तरीके से हमने लगानी है, ये हमने देखा था। प्लस हमने इसके अलावा हमने किसी भी सेल को में कलर फिल करना हो तो हम कैसे फिल करेंगे, ये देखा था। उसके बाद हमने फॉन्ट को किस तरह उसका कलर चेंज करते हैं, दैट वाज द ये भी हमने इसमें कवर कर लिया। वी हैव कवर दीज थिंग्स, द स्टूडेंट्स हु आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, we had covered these first 3 toolbars tools, and which included how how, Sorry, Mira, how if you have a question, please do not interrupt the teacher. We will come to you. आपके पास कोई question है अभी? Please say it now. if there is Okay. any question, you can write these questions, and at the end of the session, we can definitely discuss, because 10 minutes we'll allocate for the questions, and we'll quickly try to reply all these questions. Okay. Right. So students, if you do have any questions, we will come to you. Just give us some time. We will have question and answers at the end of the session, okay? If you do have any questions in the middle, just write them on the chat and we will have a look at it and we'll reply back to you, okay? Thank you. Zishan, go ahead. Okay. So we had discussed about what these tools actually, with what type of tools are these, and how does they work. These are the change of the fonts, how we can change the font. We will make any cells active, and then we'll change the font of any particular, for example, I want to change the font of the particular cell. I will highlight that, I will select that one, and then I will change the font. Okay. So this is the way we can change the font. We can change the size of or for example, I want to increase the size of this cell. I will just click, continuously clicking it. It will increase the size. And if I straight away I want to increase the size, there is the option. You can select whatever the size you want to keep. Okay. For the time being, I'm just keeping it the same how it was. Okay. And this third option was for alignment tools, and how we can align the data written in particular cells. For example, this serial number or name of students is written in the middle of the cell. I'll show you. This is how it is written in the middle. Now you will understand. These, these are these are the top alignment. If you just click that one, it will be top aligned, centrally aligned, bottom aligned. Okay. The same way, it will be left aligned, this central aligned, and it is right aligned. Okay, I'll just keep it both in the center and it is centrally aligned.
Same way, these are the indents. For example, like something is written at the corner. For example, I've written GMO, and I would just want it to be on with some gap. Just I'll click this one, and it will be keeping on. It will give some space from the start, and it will be moving on the right. Okay, so this is the way basically we can write this one. Anyways, the next is we have also discussed what is the wrap cell, wrap text, and how this merge and center will work. So you guys definitely knows all these things. So some of the tools we have already discussed. For example, this the format of the cells, which I'll discuss again back today. Let's start from this today's session, and for now I'm just changing the. I'll just apply one by one these tools, how they work. This is basically our number tools, format tools, and how we'll change the format of these, but of any particular cells, I'll let you know. For example, this is 2501. Normally, the roll numbers are written in numeric form, 2501. Okay. किसी भी रोल नंबर को लिखने के लिए हम कोई भी नंबर्स फॉर्मेट में यूज करते हैं, बट लेकिन मुझे अगर ये चीजें चाहिए कि मैं इसको टेक्स्ट फॉर्म में लिखूं या एक जर्नल फॉर्मेट में लिखूं, तो ये ऑलरेडी एक जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऊपर की 4 सेल्स को, and I'm selecting the 4 cells, and yeah, I'll click on this arrow. There are different type of formatting are there. Okay, this number format. See, when I click on the number format, it has changed this format from journal to number, and 2 digits have been there. ये हम कब use करते हैं? When we use this one, when we want to add any sort of we want to make any calculations. For example, we want to add those 2, 3, 4 figures. We want to multiply those ones or divide those ones. So these type of, if there is any numeric calculations are there, then then we change the format of the particular cells. Okay. In this case, though these are since they are the roll numbers, so we don't need to be in the numeric form, in the number form. So we'll keep it in general form. Anyways, this percentage, for example, if I click on it here, already we have just in the last class we changed the text, the format into the percentage, and that's why it is showing the percentage. If I just remove it, the percentage form, for example, then this percentage will go and it will show it is a 0.717 part of 1. So this one will be the general format of any. There is one thing I want to discuss. If you guys are have not हमने जब we gave you the enrollment form, we have mentioned the student must be somewhere around at least 9 or 10 class passed out, because in that case I'll be discussing many of the terminologies and the calculations which a kid will not be able to understand. So for general ideas, kids can get help, but definitely this is more productive for those who have some basic qualifications and who do understand the mathematics as well. So because we'll be going in detail, and we'll be discussing more and more in detail how this calculation works, how the formula works. So if there is basic calculation is there for the students, then it is far better for them to understand. मैं उन लोगों के लिए बता दूं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, मैं उनको बता दूं कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन 9th या 10th के नीचे है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इन चीज़ों को समझने के लिए। अभी सिर्फ आप अपना एक आइडिया ले सकते हैं कि एक्सेल की शीट किस तरह काम कर सकती है, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हो सकता है। बट इसको डोंट लूज होप, उसको भी आप लर्न कीजिए। ठीक है, आप अपने फॉर्मेटिंग करना सीखें, सब कुछ सीखिए, क्योंकि ये पहले स्टेज ही होगी आपकी सीखने की। इंशाल्लाह डेफिनेटली जैसे जैसे आप अब जब 1, 2, 3 सालों में, 4 सालों में, जब भी आप उस मेट्रिकुलेशन या ओ लेवल जब कंप्लीट करेंगे, तो आपकी बेसिक नॉलेज जो आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो आपने छोड़ना नहीं है, जितना आपको समझ है उतना आप समझिए, और डोंट वरी अगर आपको समझ नहीं आता, ये आपको जिंदगी के साथ लर्निंग का फेस चलता रहेगा। ओके। एनीवेज, तो मैं यहाँ पर अब आगे चलता हूँ, तो इसको मैं दोबारा से इसको मैं परसेंटेज फॉर्मेट में कर देता हूँ। यार हम डन विद दैट वन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे मार्क्स हैं, इसको भी मैंने जर्नल में रखा हुआ है। इनफैक्ट ये मार्क्स को मुझे अगर मैं नीचे तक सिलेक्ट इसको कर लूँ, तो मैं इसको मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, सॉरी नंबर फॉर्मेट में कर सकता हूँ। बट ये देखिए कि इसको मैं नंबर फॉर्मेट में किया तो इसके साथ 0.00 आ गया। इसको खत्म करने का तरीका है, क्या कर सकते हैं? एक तो आपके पास ये डिक्रीज डेसिमल्स है, इन डेसिमल्स को आप ये डिक्रीज करेंगे तो ये डेसिमल्स रिमूव हो जाएंगे। ये मैं करूंगा दोबारा से। इसका एक और तरीका है, आप यहाँ पर जाइए, नंबर फॉर्मेट में इनके चले जाइए, और यहाँ पर आप देखेंगे डेसिमल प्लेसेस 2 डिजिट्स लिखे हुए, मैंने इसको यहाँ से एरो से करके तो 0 कर दिया, देन आई प्रेस ओके, तो ये हमारे डेसिमल्स चलेंगे। ठीक है, होप यहाँ तक आपको ये समझ आ रही होंगी चीजें।
परनाज प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। ये अब ये करेंसी फॉर्मेट, अकाउंटिंग फॉर्मेट भी है। इसमें अकाउंटिंग फॉर्मेट ये होती है कि अगर आपने ये कोई चीज़ रुपीज़ में कोई इनवॉइस बना रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल, या तो हमने तो मार्क्स की शीट बनाई है, अगर कोई इनवॉइस बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें डेफिनेटली अमाउंट्स लिखने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम सिर्फ समझाने के लिए बना दूँ, मैं यहाँ पे अमाउंट करूँ, ये इतना स्मार्ट है कि इसने इस फॉर्मेट को अपने पास हेडिंग के तौर पे एक्सेल ने खुद ही उठा दिया। एनीवेज, मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कोई चीज़ यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इस डाटा को भूल जाइए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि अली हैं, अली के पास फॉर एग्जांपल किसी के पास 500 रुपये हैं, किसी के पास 200 हैं, किसी के पास 150 हैं, ऐसे हम लोग एक रैंडम डाटा बना रहे हैं, ठीक है, तो 1000 रुपये हैं। तो दिस ये हमारे पास नुमारे ये हम अमाउंट हमेशा हमारे पास किसी भी ना किसी करेंसी फॉर्मेट में होता है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमें बताने का आपके पास डॉलर्स की फॉर्मेट में मौजूद हैं इतने इतने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंडिया पाकिस्तान में हैं, तो हमारे पास करेंसी फॉर्मेट जरा डिफरेंट होते हैं, तो हम इसको जरा डिफरेंट फॉर्मेट में लिखेंगे। हम फिर वही दोबारा उसी में जाएंगे, यहाँ पे सिम्बल्स दिए हुए हैं, और सिम्बल्स में अगर आप वो क्लिक करते हैं, ये वही फॉर्मेट सर्च है, और यहाँ पर जब मैं इसके एरो पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल करेंसीज मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी डिफरेंट कंट्रीज में मैं अगर कॉमन करेंसी की तरफ ले जाऊँ मैंने आर प्रेस किया। अब ये इसमें फॉर एग्जाम्पल कतरी रियाल उसमें इंस्टॉल करने, लेकिन ये कतर क्यू ए आर कतर का रियाल है। इसी तरीके से हमारे पास एईडी होता है, दरहम्स में होती है। इसी तरीके से हमारे पास यूएसडी है, हमारे पास इसी और टर्किश लीरा है। तो हमारे पास डिफरेंट करेंसीज इसमें आ सकती हैं। जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि इसको हम यूएसडी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और इसी तरीके से हम इसको करेंसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर डिफरेंट करेंसीज मिलेंगी, जिसमें यहाँ पे रशियन करेंसी है, इंग्लिश डॉलर्स है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुरियन, आई मीन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके इसको करेंसी को, अभी मैं इसको डॉलर में रखता हूँ फिर समझाने की हद तक। जब हमने इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कर दिया, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाले जो कॉलम थे, ये मेरे पास कॉलम थे, इनको अगर मैं जो कि जर्नल फॉर्मेट में है, ये वाले, इनको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लगाता हूँ। कोई भी फॉर्मूला जब स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, या किसी भी सेल में रहेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, when we start a formula we'll start from equal to, I will write equal to, and I want to add the cells of the of above two cells for example। ये हमने सेल पर गए, दिस इज C15, आई विल प्रेस प्लस एंड आई विल ऐड विद C16। जब मैंने इसको ऐड किया, हमारे पास 503। किसी भी फॉर्मूले को ऐड करने के लिए हमने यही वाला यूज करना है। अब इसी फॉर्मेट को मैं चेंज करके, फॉर एग्जांपल मैं इसको परसेंटेजेस में रख दूंगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में रखता हूँ उसको, ताकि आपको ज्यादा मैं इजीली बता सकूं। अब ये सारे जितने भी फॉर्मेट हमारे पास चल रहे हैं, अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चल रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट कौन से होते हैं, न्यूमेरिक कौन से होते हैं, और सिंबल्स कौन से होते हैं, आपको मैं ये आप सब नोट करते जाइए। कुछ कुछ जगह पे हमें अकाउंटिंग फॉर्मेट में यूज करना पड़ता है जब हम कोई कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, या न्यूमेरिक में यूज करते हैं। कहीं हम करेंसी यूज कर रहे होते हैं, कुछ डेट्स की फॉर्मेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, मैं आपको कॉलम ऐड करना और रो ऐड करना भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। हम किसी भी कॉलम को ऐड करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमने ए और बी के दरमियान हमने, इफ यू वांट टू ऐड वन कॉलम, वी विल गो अप हियर एंड वी विल क्लिक, ये पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। वी विल राइट क्लिक हियर एंड विल इंसर्ट, व्हेन विल प्रेस इंसर्ट, इसके लेफ्ट पे ए और बी के दरमियान यानी कि एक कॉलम ऐड हो जाएगा। द लेंथ वुड बी, द साइज वुड बी द सेम एज ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा, जब मैं इसको भी सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगा, इसका साइज देखिए, इसने जो नंबर स्टूडेंट्स का जो साइज है, इसने इसका साइज भी वही होता है। ठीक है, तो ये जब भी हम कोई चीज ऐड करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। मैं आपको मजीद क्या बता रहा था, अच्छा अब हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। हाँ, डेट का बता रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई डेट मेंशन करनी है फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वैसे तो ये हमारा एक्सेल खुद ही अंडरस्टैंड करेगा,
when I'm just adding one column as date, and when you write the date, it will Excel might automatically understand the format of the particular cell. For example, if I write 25/01/24, if I write like that, it has already changed the format into date. You can see over here. Okay. So लेकिन अगर हमारे पास ये चीज नहीं मेंशन, अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक और कॉलम में 25/1 लिखा, इसमें देखें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट में, कस्टम फॉर्मेट में इसमें चेंज कर दिया। ठीक है। तो हमारे डेट फॉर्मेट और ये सारी चीजें कहाँ से चेंज होती हैं मैंने आपको बता दिया। आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं, इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैंने आपको जो बताया था कि इस पे इस सेल को क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये सब 25th का डाटा मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मौजूद है। मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें हमने फॉर्मेट कॉपी नहीं करना क्योंकि कलर चेंज हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू कॉपी ओनली द फॉर्मूला। So here the formula comes, but see, the format has not been changed. I want this format to be changed as date. What I'll do, I'll select these cells. Rather, I want to change the cell in the format of this cell as well. I want in short format like that. And I'll click here, more format. I'll go into the customs. Here we can change different types of dates, and see here we have one option available in which I can write day, month, and year. Okay, I'll just click and see 25th Jan 24. I can also customize this date as well as per my need. मैं इसमें custom नहीं किया, or I can I don't need year for example. I will remove this one and I click OK. So year will be gone. Okay. So this is the way we normally make we insert the dates, and if it is needed, I move for now. A bit tricky things have started coming. There is one more option available here, conditional formatting. What this conditional formatting does? Formatting, normally the formatting we have already done, but there are multiple ways we can play around with this format. How does it work? For example, the principal or the management to asked me to write to to highlight those people, those persons who have less than, let's say, 50% marks. Who are those persons? So what I'll do, I'll just start marking those ones. Okay, this one less, this one less, and this will take a lot of time. So for that reason, the Excel has provided us with one option. I will just click here, I will just select the cells. Okay, and I'll go in the conditional formatting for example. Here it is saying highlight cells. What this highlight cell says, if something is greater than, you can highlight, something is less than, between, equal to, and so on. So I'll say if something is, for example, less than. I say if anything is less than, let's say, Sishan, we have students requesting to speak in Urdu, so if you could do a little bit of both, that would be great. Thanks. okay, after this option, I just repeat it in Urdu as well. No, that's fine. Thank you. Okay, thank you. So this format cells, I'm just writing 50%. Okay. And once I'll say, and here what I just want to do with those who are those cells which are less than 50%, light red fill with dark red text. See what does it do? When I click OK, you will see it has highlighted, the Excel has highlighted those which are less than 50%. It has not affected these cells because this is more than 50%, and this is all other cells is being highlighted as less than 50% and highlighted with red color. I'll just change it again, and I'll make some different color so it can be visible. Now this green color has appeared. You guys, if you not understand that one, you can go through again in the recorded session. I'll just now communicate in Urdu. उनके लिए मैं बता दूं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं यहाँ के सारे टूल्स आपको मैं बता चुका हूँ, एंड आई वांट एवरीबॉडी, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज हम लोग उन स्टूडेंट्स को जो इनको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मैं आई स्टार्ट एनालाइजिंग दोज वंस एंड आई गिविंग देम द कुछ असाइनमेंट्स आपको देंगे जो आपको सबमिट कराने होंगे, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दोज स्टेप्स एंड यू आर नॉट डूइंग दोज टास्क, ऑब्वियसली वो आप उन लोगों का एक अलग ग्रुप बन जाएगा जो इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है।
तो आप इन तमाम और जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और जिसको प्रॉपर लर्न कर रहे होंगे उनको हम एडवांस कोर्सेज की तरफ लेकर जाएंगे। तो इसलिए जो जो लोग एडवांस कोर्स में जाना चाह रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो जो जो चीज़ें सिखाई जाएं उन सबको आप अपने पास प्रैक्टिस करें और उसको ग्रुप में शेयर करें। फॉर इंग्लिश लिसनर्स, those who are understanding the things, they are requested to to practice those and start preparing these sheets and try to share those sheets in the group, so we can shortlist those students and put them in our advanced Excel group, where we will start analyzing. We will give them more insights of the Excel, and we'll give them the advanced learnings about Excel. Okay, so this will be, don't take it light, and if you are serious about it, we want something from your side as well. Okay. अच्छा जी, मैं उर्दू में दोबारा आ रहा हूँ। आपको ये बताना था कि ये हमारे पास कोई, फॉर एग्जाम्पल हमने ये शीट बनाई है जिसमें उन स्टूडेंट्स के परसेंटेजेस हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने अपने 1500 मार्क्स में से कुछ मार्क्स गेन किए थे, एंड दिस इज द परसेंटेज। हमने जो लास्ट टाइम किया था कि ये फॉर्मूला लग के हमने इसको परसेंटेज को डिफाइन किया था। ऑल्सो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि इस सेल को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग डॉलर का साइन यूज करते हैं जिससे ये फिक्स हो जाता है। ये सारी चीजें मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप लोग को दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर भूल गए हैं तो यू शुड डू इट मतलब अपने अपने तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझना नेक्स्ट क्लासेस में और आसान हो। ठीक है। और आप कोशिश करें एडवांस ग्रुप में जाने की, बिल्कुल कोशिश कीजिएगा इररिस्पेक्ट ऑफ योर एज। अगर आपकी एज कम भी है लेकिन अगर आप सही समझ रहे हैं चीजों को तो ऑब्वियसली यू हैव चांस टू गो इनटू योर नेक्स्ट एडवांस लेवल। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये बहुत एक लेंदी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसके बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि आप इनको समझें। कुछ चीज़ों को जो मैं ना बता सकूं उसको आप अपने तौर पर ट्राई कीजिए। ठीक है। अब मैंने किसी भी, मुझे अगर ये असाइनमेंट मिलता है, मैंने ये शीट बना ली या मेरे पास ये डाटा मौजूद है, वो किसी किस्म का भी हो सकता है, सैलरीज का हो सकता है, मार्क्स का हो सकता है, किसी ने कंपनी में किसी एम्प्लॉयज की सेल्स हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं उन लोगों ने सेल्स की हैं। तो अपने माइंड को ब्रॉड कीजिए, सोचिए ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरह होता है। अगर वहाँ पे सेल्स हो रही है और हर कोई डिफरेंट टेरिटरीज में काम कर रहा है तो सबको अपने अपने असाइनमेंट मिलते हैं, टास्क मिलते हैं कि आपने इतनी परसेंट सेल करनी है, इतने रुपीज इतने डॉलर्स में सेल करनी है। तो हमारे पास डाटा एक अक्यूमुलेट होकर आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम उस डाटा के साथ हमने फिर उसको एनालाइज करना होता है ताकि डिसीजन फर्दर लेना आसान हो जाए। तो ये हमारे एक्सेल उसी काम आता है। अब हमें मैनेजमेंट ने कहा है कि उन लोगों को जरा शॉर्ट लिस्ट तो कर दें, बता तो दें कि जिन्होंने परसेंटेज 50% से भी कम लिया है। तो हम, वी डोंट वांट दोज स्टूडेंट्स इन आवर ग्रुप इन आवर क्लास, और हम उन लोगों को जो है पेनल्टीज करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो नहीं करते हम स्टूडेंट्स को लेके चले हम कर, या हम उनके पेरेंट्स को कॉल करेंगे कि भाई आप लोगों के जो बच्चे हैं दे आर नॉट स्टडिंग वेल, तो ये दिस इज व्हाट वी नीड फ्रॉम योर साइड कि ये हाईलाइटेड है। अब उनको सॉर्ट आउट करने के डिफरेंट तरीके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आपने यहाँ क्लिक किया, हाईलाइट्स सेल्स किया, और हमने कहा कि अच्छा चले एक काम करते हैं, उनको पहले पेरेंट्स को बुला लेते हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं। हमने कहा ग्रेटर देन है, इससे ग्रेटर देन क्या है, हमने इसको पहले सेल्स को सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमारे पास ये जो विंडो अपीयर हुई है, यहाँ पर हमने कहा कि वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 50 से ज्यादा है, मैं यहाँ पर इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि 50%, जिसकी 50% से ज्यादा है उनको जरा कस्टम फॉर्मेट को, उसको आप एक काम करें, उसको फिल कर दें ग्रीन कलर या किसी, चलिए ब्लैक, ओके करें। तो इसने क्या किया, उनको अब मुझे इन सब में ढूंढना नहीं पड़ रहा है। अब मुझे पता चलिए इसकी क्योंकि 50% इक्वल टू 50% थी, इसलिए इसने नहीं किया। ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 751 कर दूंगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा इनको हाईलाइट कर। ठीक है। और मैंने कहा ये तो मार्क्स मैंने गलत लिख दिए थे, तो ये 458 नहीं है बल्कि 758 है। व्हेन आई रोट 758, इसने इसको भी हाईलाइट कर दिया। यू गॉट मी। तो इसके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये फायदा है कि हम जैसे जैसे चीजों में डाटा को चेंज करेंगे, अगर ये फॉर्मेटिंग जो है इसकी बेस पर हमने कोई फॉर्मूला या कोई रूल लगाया हुआ है तो फौरन एप्लीकेबल होता है। ठीक है। हमने कहा ये 50%, ये 64.960 नहीं था, ये शी वॉज ही वॉज एट 254 मार्क्स इसमें भी, तो ये ऑटोमेटिकली उसको उस कैटेगरी में से रिमूव कर देगा। तो दिस इज हाउ दिस कंडीशनल फॉर्मेट वर्क्स। ओके। इसके क्वेश्चन अगर डेफिनेटली आपके पास होंगे, आप इसको अपने पास लिख के रखें। एट द एंड ऑफ द सेशन विल आस्क यू व्हाट क्वेश्चन यू हैव।
मैं इसका कोई और भी आपको बता देता हूँ। इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग गए, हमने कहा कि टॉप बॉटम भी के टॉप 10 आइटम्स अगर हमको निकालने हो तो ये हमें टॉप 10 के भी बता देगा कि जो टॉप 10 आए हैं, जिन्हों या हमें कहीं नहीं, हमने टॉप नहीं, हम पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के लोगों को हाईलाइट कर। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरो पे क्लिक किया, ये डिफरेंट कलर्स ऑप्शन वो खुद देते हैं, हमने कहा नहीं, हमें फॉर्मेट करके दो कि वो ब्लू कलर में। ठीक है, ओके कर देते हैं। और एक और ऑप्शन, या तो हमें रेड बॉर्डर लगा, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फॉर्मेट करके दे रहा हूँ, इसमें कलर फिल करके दे रहा हूँ। इसने क्या किया कि हमें ये तीन, इन्होंने बता दी कि ये तीन जो है ना, ये टॉप गेनर्स है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं पोजीशन पे। इसको भी हम फर्दर इस डाटा के साथ खेल सकते हैं कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझें। ओके, आगे चलते हैं। इसमें और भी आप अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा कि ये बाकी चीजें रूल्स क्या क्या, कि हम लोगों को कहते हैं कि डेटा बार, ये थोड़ा सा एडवांस है, ये ग्रेडियंट है। ये थोड़ा सा आपको ग्रेडियंट, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ग्रेडियंट कहते हैं आपको समझाने के लिए सीरीज ऑफ कलर स्केल है। ठीक है, उसमें एक कलर से एक तो दो या दो से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत से कंपनीज में। अगर फॉर एग्जांपल मुझे बार की शक्ल में, ग्राफ की शक्ल में किसी चीज को देखना हो, तो मैं उसमें ये वाला जो है ना अपना डाटा बार ये यूज कर। ठीक है, या मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ग्रेडियंट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे फिल चाहिए, ये उसको इस चीज को फिल की तरह, इसमें ग्रेडियंट में सिंगल सॉलिड कलर चला है। ठीक है, इसमें ग्रेडियंट है, दो कलर्स चल रहे हैं, देख रहे हैं आप। ओके, इसके साथ इसमें अलावा बहुत से कलर स्केल में आप जिस जिस पर रखेंगे वो आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस दिखाता रहेगा, तो आपको समझ आती रहेगी कि इसमें देखिए ब्लू वाइट रेड कलर का स्केल इसने दिया है, ये डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर डिफरेंट कलर उसने खुद ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी तरीके से आइकन सेट है, इस पे आप रखेंगे तो आपको बताएंगे कि किसके ज्यादा कम या डिफरेंट उसके सिनारियोज बताता जाएगा। यानी कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस यू कैन प्ले अराउंड विद दिस। ओके, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये बहुत बड़ा ह्यूज टूल है, इसके साथ बहुत सी काम हम लोग कर सकते हैं। ओके, जब आपने कोई रूल लगा लिया है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे एग्जैक्टली वो चाहिए जिन्होंने 50% मार्क्स लिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई ऐसा बता दो जिसने जिसने 50% मार्क्स लिए हैं, और उसको हाईलाइट कर दो। तो वो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये उसको भी हाईलाइट करके हमें दे देगा। और लेकिन अब मैंने कोई इस पे फॉर्मेटिंग कर दिया, जस्ट वांटेड टू बी क्लियर, मैंने सिलेक्ट करूंगा पूरे सेल्स को सिलेक्ट करने का तरीका, हाउ यू कैन सिलेक्ट दो सेल्स, यू कैन होल्ड द की और लेफ्ट की, माउस की, एंड जस्ट ड्रैग योर माउस until you select your selection is complete. This is one way you can do it. The second way, this will be your task in future. I will teach you how to use shortcut keys from the keyboard. You don't have to use this mouse all the time. You have to use keyboard. For example, if I am somewhere here, you just press shift key and down key. It will select one cell one by one. Okay, but if you will hold shift key and control key and press down arrow key, it will select the entire data of your particular row. Okay, देखिए यहाँ तक it is being selected. Okay, now it's been selected. I want to remove any sort of formatting. If I have done, I'll just click here. I will clear rules from selected cells. Okay, this is also in conditional formatting, and I'll clear it. So if there is any sort of formatting is applied over here, it will be removed. Okay, there is one more next option I'm going. This is format as table. In today I'm taking a bit more time, but I'll try to finish these tools, and then I'll come to your questions. Okay. The format is table is a smart sort of tool. Once you want to select any data and you want Excel to recognize it as a table. Why you want it? Because when you select it as a table, then there are multiple options gets open and you have more ways to handle the data. Okay, so but इसको करने का क्या तरीका है, आप इसको you will select it. मैं आपको उर्दू में बता दूं, हम बहुत से डाटा को जो हमने टेबल बनाया है उसको एक्सेल को भी बताने के लिए कि ये टेबल है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वी फॉर्मेट इट एज टेबल। हमारे पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं डाटा को साथ उसके साथ एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने टेबल एज फॉर्मेट की, मुख्तलिफ मुझे ऑप्शन देता है, मैंने कहा मुझे चलो इस कलर में करके दे दें, इस स्टाइल में करके दे दें,
तो उसने मुझे सिलेक्शन करके रेंज करके बता दी, मैंने कहा ओके, और इसने इसको देखें अपने तौर पे इसने फॉर्मेट करके दे, ठीक है। कुछ इसने यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स लगा दिए, आई लेट यू नो एग्जैक्टली क्या फिल्टर, ठीक है। ये आप अपने पास ट्राई कीजिएगा कि ये क्या है फॉर्मेट एज टेबल, यू शुड must try these type of options and how all the options does work and how it can help you in formatting the sheet. Okay, the next is cell styles. ये किसी पर्टिकुलर सेल स्टाइल के लिए, if you don't want to do formatting in every cell in all the table, you can just do it in particular cells you want to see. Where I'm just keeping the mouse, it is changing the format. Okay, so there are multiple options you can use from here. These are for formatting any particular cells. Okay, and now I'll move to the next. Here is the next is the cell. It is written cells, and what does it do? मैं यहाँ पर I'll just click here and I'll select insert. There are insert cells. What when I click insert, then there is one more window pop-ups, and this pops up and it shows like how this it works. There are multiple options. One is shift cells right. If you want to shift your cells on the right hand side, it will, you can do it. I'll click it and say okay. It will be moved here, and see the last that the last cell went outside this table now. Okay, because it has moved on the right. Same way I'll do undo it. Give it back. Again, I will insert cells, say in cells down. And what it will do, it will send it down. Okay, we have seen this cell has went down. What I'll do for your better understanding, I will highlight this cell and now I'll do it the same way. I'll say right down. See, this cell moved down. Okay. What else? If I just want, there is two options to, if for example, if I want to insert one row over here, I'll select it and I will go insert cells. It will automatically be inserted because this row is selected. But if I have not selected the entire row, I'll just click here. I'll say insert cells and I will put entire row. What will do? It will insert a row up. As I told you, it will, if you select this cell, this column, and if you want to insert any other column, it will be on the left hand side. And if you select the row, the row will be inserted. The row will be inserted uh, on the top of this particular row. Okay. Anyways, so I'm just doing the last option here is to entire column. Here I'll click on entire column and click OK. The column will be inserted. Okay. So the next are insert row sheet rows. Again, it will straight away insert the sheet, the rows, and column will insert the column. This is the insert sheet. There is one option. If you see here, here I can insert the sheet from here as well. And if I don't want, I can insert from here as well. Okay, the sheet will be inserted. Got it? The next is the same way delete. I want to delete the cells. I'll click, and the cells will be deleted. Same. So this insert and delete will work opposite each other. And this is the last thing. Format. This normally is being used to increase the row height. For example, I can hold this key, mouse key, from here, and I can drag it down to increase the row height. Same way, I can hold from here and I can drag it from the right, and I can increase the width of the column. But here I have also an option. For example, if I want to increase the row, I can increase from here row height, and it will ask me how much. I said, okay, make it 40, and it will increase the row height. Same way I can increase the column. उर्दू में मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें ये हमारे पास डाटा रोज इंसर्ट करने के लिए, सेल इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इंसर्ट करके बता दिया है, यू हैव सीन दैट वन। ओके, मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट द वर्क इज सेम। आप इसको क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल्स करेंगे। आपको एक सेल ऐड करना है, आपको इंटायर रो ऐड करनी है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह ये डिलीट करने के ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये हमारे पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। किसी इसमें फॉर्मेटिंग में चल रहा हूँ, किसी रो की हाइट बढ़ानी है तो हम यहाँ से मैनुअली ड्रैग भी कर सकते हैं, एंड वी कैन फॉर्मेट फ्रॉम हियर। हम यहाँ से भी इसको हाइट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 20 लिखा, 20 पिक्सल, और ये इतना ही हाइट इसकी होगी।
एनीवे इसके नीचे मैं जाता हूँ, ये विजिबिलिटी के किसी रो को हाइड करने के लिए, कॉलम को हाइड करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये रो नहीं दिखानी तो मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। और इसी तरीके से मुझे अनहाइड करना हो तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इनके इन बिटवीन जो भी रो होगी वो अनहाइड होगी। ठीक है, इसी को अगर मुझे मैनुअली चलना हो तो मैं इसको, इस सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, आई विल आई I click here format and hide row. The row will be hidden. Okay. इसी तरीके से मैं कॉलम को भी हाइड कर सकता हूँ। There is the last option is here. यहाँ पर अभी एक्चुअली हैं तो बहुत सारी चीजें। दिस इज मैं आपको इजीली मतलब वर्बली बता देता हूँ। ऑटो फिट कॉलम आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसको डबल क्लिक करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली बी एडजस्टेड, जो कि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। आई कैन डू फ्रॉम हियर एज वेल ऑटो एडजस्ट। एंड in at the this organized sheet, how you can organize the sheet, you can move or copy a sheet. How? For example, this is my active sheet, I can right click it and here you can see move or copy. Here also you can find the option. I'll click here, I'll say okay, keep it here on the at the first or make it in between of these two. When I click here, it will be copied after GMO and before results card. Okay, the same way I can copy it as well. I'll rename it, I'll click rename and I can write results 2. I can rename the sheet as well. Okay, these are insert the sheet and delete the sheet. These are two more options. Don't delete the sheet because you cannot recover it if you have saved the data. So it is very important. You should be very careful while deleting anything. This is a protect sheet. When I protect the sheet, nobody can, you can you play with the data. So the control will be in my hand. The same way, the tab color. This is the color of the tab. Here, these are the tabs. For example, I want to change the color. I'm just changing it. See, the color of the sheet tab is changed. ये कलर चेंज करने के लिए, टैब के कलर चेंज करने, शीट के कलर्स चेंज करने के लिए, टैब कलर चेंज करने के लिए भी ये यूज होता है हमारे पास ऑप्शन। और ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। टैब कलर, मूव और कॉपी, रीनेम शीट, प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, दीज आर ऑल अवेलेबल विच आई हैव ऑलरेडी शोन। लास्ट में यहाँ पे जाते हैं ऑटो सम का। ऑटो सम इज वेरी बेसिक थिंग। फॉर एग्जाम्पल क्लिक हियर, I want to add all these marks obtained. One thing I'll show you if I can find here. No, it will be on some other option. I'll just make it myself. I'll teach you later on. These are the marks obtained by the students. मुझे इनके सबका टोटल चाहिए. I just want a total of these marks. Total how much marks, like how many marks students have obtained. So what I'll do, I'll click here and here is one option in home, auto sum. When I click on auto sum, it will include automatically all the cells above, and I'll press enter, and all the two marks will be added. Okay, so this is the way I can add those things. And there is one more option is there. हम एक और तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं. एक एडिंग का ऐड करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको. इक्वल टू फॉर्मूला विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड सम इज द फॉर्मूला फॉर एडिंग एनी नंबर. सो मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा. आई विल शिफ्ट small bracket. This will show you, this will ask you, now it will ask you which data you want to be summed. तो मैंने इनको ब्रैकेट लगा के I will select this data and I will hold the key, mouse key, and I will drag this data. So what it will do, it will select F5 to F16. This is F5, the first cell, and this is the last cell. So these all will be selected. I will close the bracket, I will press enter, and it will be added. So this is the way you can add the data in particular cells. Okay. Next is fill. This one I want you to, these are the series and justification and flash fill. These are a bit lengthy, not that much lengthy. For example, I told you before in the first, this 1, 2, and 3. Oh, no. 1, 2, and 3. And if I just click here, and here you can see fill. So these are again the series. They're asking me what type of series, how many steps you want. For example, I want 5 steps, for example. It will increase with the 5 steps. Okay, but if I want in the future further cells, then I can change the values as well. Okay, these are the clear all. Everything will be cleared. Clear format. It will clear the format. I can clear the format here as well. So nothing will be there. Clear all. Here also we have clear content, clear comments, clear hyperlink. Hyperlink, if you just want to know,
Upper link is nothing but a link to where we redirect any user to particular web page or particular sheet or whatever you want. ओके, किसी भी शीट पर हम लोग को अगर हम किसी सेल्स पर लिंक लगा देते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे लगाते हैं, पर लगा देंगे तो वी कैन टेक द यूजर टू पर्टिकुलर सेल, किसी और सेल पे लेके जाने के लिए, किसी शीट पे जाने जाने के लिए, या किसी वेब पेज पर भी जाने के लिए, वेबसाइट पे जाने के लिए भी हम उसको डाटा को, उस लिंक को यूज करते हैं। नाउ द सॉर्ट एंड फिल्टर इज देयर। किसी इसको फिर नेक्स्ट सेक्शन में रखते हैं, बिकॉज दिस विल बी अ बट अगेन, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दूं। हमारे पास हम किसी भी डाटा को सिलेक्ट करते हैं, या उसके कॉलम के हेडर को सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल मैं इन सबको और मैं सॉर्ट एंड फिल कर देता हूँ। मैं इस पे सॉर्टिंग फिल सॉरी मैं इस पे मैं इस पे फिल्टर का ऑप्शन लगाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरो आ जाता है, वी गेट एन एरो एरो व्हेन आई क्लिक इट, इट विल गिव अस ऑल द वैल्यूज व्हाट इज इनसाइड द सेल, एंड आई वांट only the selected cell. For example, I just want show me only who has got 148 and 152 marks. Then only those two will be selected, and I can know, okay, Siraj and Shazi over there who got this mark. Okay, so this is the way how this filter works. बाकी ये फिल्टर को क्लियर करने के लिए है फाइंड एंड सिलेक्ट। इसमें सिर्फ हम लोग किसी भी सेल को सर्च करने के लिए, मैं आपको दोबारा से रिकैप कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर द आज के लिए फॉर टुडे आई एम डन विद द टुडे सेशन, सो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज।